So we just went through the course outline जो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी इंशाल्लाह आज, और फिर हमने उसके बाद कुछ एप्लीकेशन एरियाज डिस्कस किए फ्लूइड मैकेनिक्स 1 के. Then moving on to chapter number 1 of your book, which is Fluid Mechanics Fundamentals by MUNSON Young. तो ये बुक मैंने आपके कोलीग्स जो क्लास में मौजूद थे उनके साथ भी शेयर कर दी थी, और जो फोल्डर आपके साथ शेयर किया जाएगा उसमें भी ये मौजूद होगी. So in chapter 1, we will be trying to learn that what is dimension and units of physical quantities, and identify key fluid properties and their analysis, and then to calculate those key fluid properties from the appropriate information. Then we will be trying to explain the effects on the fluid compressibility, and we will discuss in detail the concept of viscosity, surface tension, and vapor pressure. So in the last lecture, we formally defined mechanics. I will be asking from the students in front of me to just give me a quick review of that lecture. So what is mechanics? The study of bodies or objects at rest or in motion. And what is fluid mechanics? When you apply the laws of mechanics to the fluids, it is fluid mechanics. So formally, I will just give you the definition of fluid mechanics. Fluid mechanics is the discipline within the broad field of applied mechanics that is concerned with the behavior of liquids and gases at rest or in motion. In fluid mechanics, we study both fluid statics and fluid dynamics. Like you would have studied engineering statics, and now you will be studying engineering dynamics in this semester. Similarly, in fluid mechanics, we will be studying fluid statics and fluid dynamics. In fluid statics, we can consider the fluids at rest. We also discussed in the last lecture in detail what is fluid, what is solid, and how their behaviors are different. Why we separately study the behavior of fluids from solids. Solids are those that do not travel with the shear force, that do not flow, while fluids are those that travel with the shear force. If I apply shear force on a solid, it will not deform under that shear force. But if I apply shear force on a surface of a liquid or a gas, that will travel along with the. This gives rise to an important law in fluid mechanics. The velocity of the top layer of the fluid will be equal to the velocity of the. No, it will stick to the body that is being used to apply force. So the top surface of the fluid layer will attach with the body, and it will bear the velocity of that body or that tool. So this is called no slip condition. So if I like put water on this surface, and if this surface is not moving, the velocity of the bottom layer of the water would be 0. And if I pile up a chunk of water on that, like imagine there is transparent walls, and I start moving the upper layer with some, let's say I flow this remote on that top layer, then the top layer would bear with the velocity of this remote. So this is basically called no slip condition. The top layer or the bottom layer of the fluid stick to the surface of the body in motion or at rest. Okay, this is no slip condition. We also explained, I will just draw quickly here for the students online so that they can. Yes. Like these are two bodies, and in between you have fluid. Just to explain in more detail, first we consider that in between these two bodies A and B, we have solid. In between these two bodies A and B, we have a solid material. This is solid. Okay. If I apply force in the horizontal direction, force F on the top surface A, what would happen? It will try to shear the top layer of the solid, but the solid would resist this force, resist this force, so it will try to retain its shape. But there is a limit. What is that limit? Elastic limit, yield point. So the force till yield point would allow it to deform, but as soon as you reach at yield point, sudden flow there will be permanent deformation in that solid. So solids resist shear forces till yield point.
they do not deform. On the other hand, if we had similarly, we had two surfaces, A and B, A dash and B dash. But now instead of solid, there is some liquid in between them. Liquid or gas in between them. And the top surface is moving with velocity V, while the bottom surface is at rest with velocity equals to 0. So the top layer, this velocity V is created by some force. As soon as I apply that force, the top layer will start flowing with the body A. So it has attached itself to the inner surface of the body A. On the other hand, the bottom layer will not move. It will stick to its position because body B is not moving. So this condition is called no slip condition. It is very important in studies of fluid behavior. No slip condition. Then we explained the concept of continuum in the last class. What is continuum and why is it necessary to formulate a continuum before studying the behavior of a fluid? So what is continuum and why it is required? Anyone? Ji? Last time I explained this with an example, like if I tell you that the velocity of air is 5 meters per second in this room in which we are sitting or standing, where this velocity is being measured or which molecule is bearing this velocity. This is the average of all the molecules of air present in this room. Some molecules may have velocity of 10 meters per second. Some may have velocity of 2 meters per second. Some may have zero velocity. Some may have velocity of 5 meters per second. But the value I am telling you that the velocity of air in this room is 5 meters per second is based on the average value. And how this average value is calculated? This is based on continuum. Why continuum? We need to understand structure of the matter. In solids, the molecules are fixed at their position. They have very little freedom to move. They are not free to move. On the other hand, in fluids, molecules or atoms have freedom of motion. They can move freely, less in liquids and more in gases. So based on this, the properties in fluids vary greatly from molecule to molecule. So whenever you have to study the behavior of the fluids, you have to define certain average value of that property. Whether it's pressure, whether it's temperature, whether it's viscosity, it's surface tension, it's vapor pressure, whatever property is it, you have to define it as average value because the fluid behavior will change from point to point. Therefore, in order to completely explain the fluid behavior, we need average values. And for those average values, we define the concept of continuum. In solids, that is not a problem because whole solid is a single body. Molecules or the atoms don't have liberty of motion. They can only vibrate about a fixed position. Then also in the last lecture, we discussed the concept of dimension, dimensional homogeneity, and units. You are very well aware of these concepts, these terms. I will just be quickly giving them 2 minutes so that we can move on to our today's topic. Dimensions are basically requirement to define any physical quantity. These dimensions should be qualitative and quantitative. By quality, we mean what is it? Is it length? Is it time? Is it temperature? Is it intensity? Is it current? Is it number of moles? The 7 base quantities you have been studying in your previous classes. But in fluid mechanics, we only consider 4 of them. That is length, temperature, mass, and time. Length, temperature, mass, and time. Here in fluid mechanics, we define temperature by term theta because T would be used for time. Time is more important parameter in fluid mechanics as compared to temperature. And what is quantity? Whenever you associate a unit system with a quality, with a, like I associate meters with length, Celsius with temperature, seconds with time, then those are the quantities. 10 second. Second is
quality and 10 is quantity. 10 hours. Hours is now time and 10 is its quantity. Is it clear? The students, those students who are online, is it clear? Yes, sir. Okay, moving on. So in fluid mechanics, we'll be concerned with length, time, mass, and temperature. You can see on your screen, I have encircled it. These four quantities are very important in fluid mechanics. Then dimensional homogeneity. You are well aware that the dimensions on both sides of equation should be same. They are same because we are using a consistent set of dimension on both sides. Either all of the dimensions are derived from some basic dimension, so equation should be homogeneous. In fluid mechanics, we can define basic dimensions in two forms. That is length, time, and mass. Length, time, and force. If we take mass as base quantity, then force is derived quantity. And if we take force as base quantity, then mass is derived quantity. Is it clear? So if you are using length, time, and force, then you will be using units of mass in terms of force. On the other hand, if you are using mass as base quantity, then you will be driving units of force from mass. So in your slide, you will be saying first equation of motion, and you can be very comfortably, you can drive it, that you can show that it is homogeneous on both sides. But you need to understand that equations can be generally homogeneous and can be restricted homogeneous based on the constants involved in those equations. Yes, at the end. Yes, they are equal. That would be a constant. 2 has no units. 2 LT minus 1 will have no units. Is it clear? It's a basic equation of FSC level. It's the first equation of motion, and you have done this in that class. Constants have no units. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 will have no units. So it will just go away from the equation. But if a constant have unit, now that is the point of concern. If a constant, like in the equation number 1 on your slide, which I have underlined in green, d equals to gt squared by 2, it's a modified form of your second equation of motion. D is distance, g is gravity, t is time. If g is generally defined in equation, like in equation number 1, then it is generally homogeneous. Whatever dimension you choose, like d is length, d is length, g is length divided by time square, and t is time, again it's in square, so t square. So it's a general homogeneous equation. I have omitted 2 because it's a constant. It has no unit. On the other hand, if I restrict the value of g to certain unit system, like in equation number 2, if I restrict the value of g to a certain unit system, in this equation I have restricted the value of g to feet per second square. The value of g I have used here is 32.2 feet per second square. Now prove in SI system that this equation is homogeneous. Can you prove it? If I choose length, 16.1 is length by time square into time square. Again, it is homogeneous, but as long as I am using general dimensions. When I start using, let's say, the things I will be writing in red will be incorrect. So I use SI system for equation number 2. I'm using dimensions of system international for equation number 2. Okay, length is in meters. I write meter. 16.1 has units of feet square, feet per second square.
into second square. Second square will cancel with second square, but meter cannot be equal to feet. So your equation is not homogeneous in SI system. It should be homogeneous in English system. I have to use, because 16.1 is a constant that has units of English system. On the other hand, if I want to make it homogeneous in SI system, I have to use value of G as 10 meter per second square. Is it clear? Any question, G? Anyone from the other side? No, sir. G has G has value of 32.2 feet per second square in English units. And your equation was in English units. Equation is D equals to half GT square. I have used value of G as 32.2. 32.2 divided by 2 is 16.1. So D equals to 16.1 T square. Now that you have fixed the units of G in feet per second square, so it is mandatory for you to use D and T in units that are English units. D should be in feet and time should be in seconds. So equation 1 was general homogeneous and equation 2 is restricted homogeneous. So based on this, we define some system of units like SI system, in which we use length in meters, time in seconds, mass in kilograms, and force in Newton. Mass and force are written in parallel because they would be interchanged. If you are using force as basic unit, then mass would be derived unit. And if you are using mass as base unit, then force would be its derived unit. Temperature in kelvins, the fourth quantity. In British gravitational system, BGS, length is in feet or foot, time is in seconds, mass is in slugs, and force is in pounds. Temperature is in Fahrenheit or Rankine. The unit of Rankine you will study in detail in Thermo 1. English engineering system. It is similar to British gravitational system except the units of mass. The units of mass are defined as pound in English engineering system. Length is foot or feet, time is in seconds, mass is in pound mass, and force is in pound force. Temperature is Fahrenheit or Rankine based on your choice. Now the today's topic. Any question from the till now? Any question? Anyone from class? Anyone online? Any confusion? Any query? Okay. We'll be just defining some basic properties that how mass of fluid can be measured, how weight of fluid can be measured. How do you measure the weight of a solid object? My question from you. You put it on a weighing machine and you measure it. How do you measure a weight of solid? How do you measure a weight of solid? Gravity or spring mass system, that is M into G. You multiply mass by gravity and you measure mass by putting it in a weighing scale, a spring balance, whatever you need. But the weight of solid would not change even if it is deformed, even if you have applied force, even you melt it, whatever, it should be bearing same mass. Its mass is fixed. On the other hand, the volume of fluid will affect the weight. So how will you measure the weight of a fluid? सर उसकी डेंसिटी एक बार कैलकुलेट कर लें एक ही दफा और वॉल्यूम से फिर मल्टीप्लाई कर लें. Someone online is telling me that, okay, we measure the density of a fluid once, and then we always multiply it with its volume. Then we'll have mass of that fluid. Clear? So density or specific volume.
is very important parameter to measure fluid mass or weight. What is density? Mass per unit volume. For a solid, how can you measure density? For a solid. But how would you determine it experimentally? It is mass per unit volume, but how will you measure it experimentally? Yes. If I create a box of 1 meter cube of having volume 1 meter cube, all the dimensions of 1 meter cube, and I weight it, that would be density of that solid, kg per meter cube, whatever kilograms are in that meter cube of a cube. Okay, is it clear? Based on this, I define specific weight, gamma. Specific weight of a fluid will always be defined by symbol gamma. Gamma can be written in this way or the traditional way you have been writing gamma. It is for specific weight. It is for specific weight. Specific volume is inverse of density. Density is mass per unit volume, and specific volume is volume per unit mass. Specific volume is, I write in front of you, density is rho, and specific volume is, like I write it with this, is 1 over rho. So whether it's specific volume or density, they are both the same. They carry the same meaning. So specific weight gamma is rho multiplied by gravity, rho g. If you have density of a fluid and you simply measure it with gravity, multiply it with gravity, then you will have specific weight of that fluid. Specific gravity. Specific gravity is density of specific fluid divided by density of water at 4 degrees Celsius. Specific gravity is density of fluid divided by density of water at 4 degrees Celsius. Specific gravity will be 1 when and when it will be same when you have density of water. So specific gravity of water divided by specific gravity of water at 4 degrees Celsius. But 4 degrees Celsius is standard. If you have density of water at some other temperature, then it will not be equal to 1. All the other fluids will have specific gravity less than 1. 1 से ज़्यादा हो सकती है किसी? सर जो वैसी जो फ्लूइड्स ये वाटर से ज्यादा डेंस होंगे उनकी dense specific gravity 1 से ज्यादा होगी. So it is giving you information that this fluid, if I give you value of specific gravity and I ask whether this will float on the surface of water or will it submerge in water, can you tell this? If specific gravity Yes, is sir. less than 1, it will float on water surface. On the other hand, if specific gravity is, it will submerge. So the heaviness with reference to water, heaviness of a fluid with reference to water. Specific gravity can also be measured by dividing specific weight of a fluid divided by specific weight of water at 4 degrees Celsius, because it's again rho g. 4 degrees Celsius standard because density of water remains. It is a stage after which water has, if you go less than 4 degrees Celsius, water's molecular structure start to change. It's start to form honeycombs. On the other hand, if you go beyond 4 degrees Celsius, it starts to again reorganize its molecular structure. So you fix it at 4 degrees Celsius. If you want to reference it to another temperature, then that would be with respect to that specific structure. Okay. 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है डेंसिटी? 1000 kg per meter cube. ठीक है, जो आप जिसको 1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब भी आप कह सकते हैं, इफ इट स्पेसिफिक वेट. तो यूनिट क्या होंगे स्पेसिफिक वेट के जी? न्यूटन पर मीटर क्यूब, वेट पर यूनिट वॉल्यूम.
डेंसिटी के यूनिट्स क्या हैं? kg per meter cube, and specific gravity is unitless. ठीक है जी, वो लास्ट से भी क्वेश्चन था. डेंसिटी का भी इनवर्स हो सकता है और स्पेसिफिक वेट का भी. फर्क क्या पड़ेगा? तो जी अगर आप कर रहे होंगे तो फिर वो न्यूटन पर मीटर क्यूब की बजाय मीटर क्यूब पर न्यूटन हो जाएगा. अगर आप डेंसिटी के साथ करेंगे देन इट वुड बी मीटर क्यूब पर केजी. ठीक है, लेकिन फिर आपको पता होगा ये स्पेसिफिक वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी है. ठीक है, अगर दो फ्लूइड्स का कंपेयर करेंगे तो फिर आपको रेशियो में चले जाएंगे, इसलिए हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेशियो डिफाइन कर दी जहां पे यूनिट्स खत्म हो गए. फिर आप चाहे स्पेसिफिक वेट की रेशियो लें, चाहे डेंसिटीज की रेशियो लें, चाहे आप वॉल्यूम्स की रेशियो लें, आपके पास एक ही तरह की क्वांटिटी आएगी. लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था देयर आर पॉइंट्स एट व्हिच गैसेस विल नॉट बिहेव एज फ्लूइड्स. तो वहां पे हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस करते हैं. तो वन अप्रोक्सीमेशन गैसेस का बिहेवियर आइडियल फ्लूइड्स की तरह रहे या दे बिहेव आइडियली एज फ्लूइड्स, दैट वुड बी बेस्ड ऑन आइडियल गैस लॉ. इसको आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, बार बार यहाँ पे जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. आइडियल गैस लॉ इज डेंसिटी इक्वल्स टू P by RT. Rho is density, P is absolute pressure, R is ideal gas constant, and T is absolute temperature. Clear है? That is when you are not using density. PV equals to MRT. Then you involve volume and mass. Here we have used density. ठीक है, तो अब ये इतनी इंटरचेंजेस आपको करनी आनी चाहिए. लॉज के अंदर छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस करनी आनी चाहिए. Absolute pressure. What do you understand by term absolute pressure? Because absolute pressure, gauge pressure, vacuum pressure, these terms you will be encountering a lot in fluid mechanics, not in fluid mechanics as well as in thermodynamics. So you should be very well clear about this concept from the day one. What do you understand by term absolute pressure? The pressure at 25 degrees Celsius, no. The pressure at absolute temperature, no. What do you, okay, I just simplified. What do you understand by absolute marks? सर जो एब्सोल्यूट प्रेशर हमारे पास होगा वो कोई फ्लूइड का जो टोटल जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो, यानी कि एक तो हमने जो गेज पे मेजर किया वो, और उसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उस टाइम का होगा वो भी ऐड कर दे, फिर एब्सोल्यूट प्रेशर बन जाएगा. Okay, someone online is telling me correct. Okay, who is it? अब्दुल्ला लियाकत सर. Abdullah Liaquat. Abdullah is telling me correct. But let me just relate it to your concept. What do you understand by term absolute marks? You have 87 absolute marks. What's your understanding of those 87 marks? Those are from 100. Fixed value, I have 87% marks. But I say your relative marks are 87. Then that is from some reference, like maybe the highest student or the lowest student or the average student. Similarly, absolute pressure is from 0, in which you do not add the value of atmospheric pressure. The gauge which you use to measure pressure is indicating you gauge pressure because it is at 0 at atmospheric level, and atmosphere has pressure of 14.7 psi or 101.3 pascals. Kilopascals या pascals? Kilopascals. ठीक है? Kilo Newton per meter square. So that in gauges you have nullified that 101.3 pascals, kilopascals. You start measuring from, if I draw a line from here, in general, you are measuring pressure from this reference. This is your atmosphere. The line is your atmosphere, and it is always at 14.7 psi. If you add 14.7 into gauge pressure, that would be your absolute pressure, because this height is from 0 pressure. This height is 14.7
14.7 psi। अगर आप में से कभी किसी ने गौर किया हो तो इसके साथ हमेशा क्या लिखा जाता है? psi a। कभी गौर किया है किसी ने? अभी थर्मो कोर्स में आप देखें तो बार बार 14.7 psi a। a इज एब्सोलूट। जब भी एब्सोलूट प्रेशर को रेफरेंस किया जाएगा उसके साथ, उसके यूनिट्स के साथ a की जो सबस्क्रिप्ट है वो आएगी 14.7 psi। गेज प्रेशर के साथ कभी नहीं लिखा जाता जी। गेज प्रेशर इज psi, एब्सोलूट प्रेशर इज psi a। मुख्तलिफ बुक्स में आपको मुख्तलिफ तरह से टर्मिनोलॉजी मिलेगी। सो बिफोर स्टडिंग एनी बुक यू शुड जस्ट रिव्यू के जी के इस बुक में कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की है। कई जगह पे वो कहेगा हम गेज प्रेशर के साथ जी लिख देते हैं, एब्सोलूट प्रेशर के साथ कुछ नहीं लिखेंगे। बाद में कहेगा कि हम एब्सोलूट प्रेशर वाली जो टर्म्स होंगे के साथ ए लिख देंगे, गेज प्रेशर के साथ कुछ नहीं लिखेंगे। कोई तीसरी बुक होगी इसमें कहेगा हम गेज प्रेशर के साथ जी लिखेंगे और एब्सोलूट प्रेशर के साथ ए लिखेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली जो ज्यादातर किताबें हैं उनमें आपको यही नजर आएगा कि 14.7 या जो भी एब्सोलूट वैल्यूज उनके साथ ए लिखा जाएगा और गेज के साथ कुछ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि गेज प्रेशर है, गेज से मेजर हो रहे हैं। ठीक है, सो वी यूज आइडियल गैस लॉ टू अप्रोक्सीमेट द बिहेवियर ऑफ गैसेज टू आइडियल कंडीशंस और रियल कंडीशंस के जो गैसेज हैं उनको नॉर्मल कंडीशंस के उनका बिहेवियर मॉडल करने के लिए हम आइडियल गैस लॉ यूज कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट नियर टू लिक्विफेक्शन। तो लिक्विफिकेशन के करीब चल जाएंगे फिर आइडियल गैस लॉ आप अप्लाई नहीं कर सकते, उनका बिहेवियर फिर किसके करीब चला जाएगा? लिक्विड्स के बिहेवियर के करीब। तो फिर वहां पे हम लिक्विड लॉज उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन ऑनलाइन जी? सब क्लियर है? यस सर। ओके जी, गुड। विस्कोसिटी स्ट्रेट अवे पढ़ाने की बजाय इसको मैं आपको एक आसान सी डेरिवेशन के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगेन कंसिडर वी हैव टू प्लेट्स A and B. This is plate A and this is plate B. You are very well clear about the viscous behavior. आप सबको एग्जाम्पल शुरू से दी आती है कि पानी तेजी से बह जाता है, शहद बड़े आराम से फ्लो करेगा, जैम उससे ज्यादा जो है वो, ये सब किस प्रॉपर्टी के साथ लिंक्ड है? विस्कोसिटी के साथ। थोड़ा सा उस चीज को रिवाइज करने के लिए एक शॉर्ट सी वीडियो आपको दिखाते हैं ताकि viscosity is resistance to flow. Now, okay, we'll start with two plates A and B. This is plate A, this is plate B. The distance between them is L, okay, and they are filled, the two plates are connected with fluid. There is fluid in between these two plates. I just show it with some other color, maybe blue or green. The plate is filled with fluid. The bottom plate has velocity of 0, u equals to 0, whereas the top plate is moving with u of y equals to v. Clear? When I apply force F or give this velocity to plate A, the fluid in contact with plate A will start moving with it. Is it so? तो अगर हम एक पॉइंट चूज करें प्लेट A के ऊपर और इनिशियल कंडीशन जब दोनों प्लेट्स रेस्ट पे हैं ड्रॉ करें, ऐसे वर्टिकल लाइन आएगी, ऐसे ही है। लेट्स कॉल दिस 1 एंड 2। थोड़ी देर बाद जब वेलोसिटी v के साथ प्लेट A मूव करेगी, पॉइंट 1 विल मूव टू 1 dash, whereas point 2 will retain its position because the liquid at the bottom plate is at rest because of the no slip condition. So this is your, so there is deformation by some angle beta, and the distance between point 1 and point 1 dash is dA.
we will call beta d beta because it is very small angle. In fluids this will be very small angle. अगर हम tan of d beta कैलकुलेट करें, अगर बीटा को मैं d beta कह रहा हूँ, डिफरेंशियल एंगल कह रहा हूँ, छोटा सा एंगल है, तो tan of db क्या होगा? d a over lg ऐसा ही होगा. Anyone having confusion? What is tan? Perpendicular over base. और perpendicular क्या होगा? एंगल की जो opposite side है that is perpendicular and the other side is base and the remaining is hypotenuse. Because beta is a small angle. Beta is a small angle. So tan of small angle is always equal to the angle itself. Clear है ना सबको ये concept? Tan of 1 would be approximately 1. Tan of 0.9 would be approximately 0.9. Tan of 0.8 would be approximately. ठीक है? So we can write that d beta is क्लियर जी. ये डिफॉर्मेशन होगी इस रेट के साथ, इस एंगल के साथ आपका फ्लूइड फ्लो करेगा, यहाँ डिफॉर्म होगा. यहाँ तक तो बात समझ आ गई जी. tan of small angle is tan itself. तो tan 0 is 0, tan of 0.1 is 0.1. ठीक है? जब 1 से ऊपर के एंगल्स पे जाएंगे फिर tan की वैल्यू थोड़ी सी चेंज होना शुरू होती है. ओके, नाउ कम्स द वेलोसिटी पार्ट. पॉइंट 2 पे अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूं, ये मेरा y एक्सिस है. सॉरी फॉर द बैड राइटिंग जी. मैं यहाँ पे एक्सिस सिस्टम ड्रॉ करके दे देता हूँ ताकि समझने में. वर्टिकली हमारे पास जो एक्सिस दैट इज y and horizontally is your x axis, but that x axis is equal to, उसके ऊपर वैल्यू कौन सी है? वेलोसिटी. ठीक है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट इज हाइट और लेंथ. ठीक है? सो दिस इज वेलोसिटी एक्सिस u, या जिसको हम u ऑफ y भी कह रहे हैं, f ऑफ y जिसको आप नॉर्मली पढ़ते हैं यहाँ पे वो वेलोसिटी इसलिए u ऑफ y. यू हैव अ लाइन फ्रॉम पॉइंट 2 टू पॉइंट 1 डैश. ऐसे ही है. इसकी इक्वेशन कैलकुलेट करके दे सकते हैं. कैन यू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? यस, जल्दी से कैलकुलेट करें. 2 से 1 डैश, 1 डैश कैसे होगा? 1 डैश पे हमारे पास x एक्सिस क्या है जी? कैपिटल U. और वर्टिकल एक्सिस क्या है जी? L. पॉइंट 1 डैश इज एट प्लेट A, और प्लेट A तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं? L डिस्टेंस. ओके. एट पॉइंट 2 we have x as 0, velocity is 0, and y is also 0. अब आप इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. जल्दी से इक्वेशन कैलकुलेट करें. You have to tell me what is u of y. Equation of u of y. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आप सबको आती है, y equals to mx plus c. Y equals to mx plus c. Here x is u of y, y is y, and x m is you need to calculate from those coordinates. ठीक है? This is slope intercept form, y equals to mx plus c, because this is intercepting at 0 0. So by rule you know c is 0. c calculate भी हो सकता है, calculate करें तभी आपको 0 ही मिलेगा. But good engineers should know that the equations that are passing through coordinate origin have c as 0. So c is 0, आप calculate भी कर सकते हैं. m is coordinates of 1 dash divided by coordinates of 2. ऐसे है? नहीं. Vertical coordinates divided by horizontal coordinates. y2 minus y1, जिसको आप जनरली y2 के साथ कहते हैं. यहाँ पे वो क्या होगा? y1 dash minus y2 divided by x1 dash minus x2. So L minus 0 divided by u
minus 0. So m is, and here x is, इक्वेशन के अंदर मैं x को चेंज करूं, here this x is small u of y, velocity as a function of vertical coordinate. ठीक है, so your equation would be y equals to L by capital U, which is constant. U is basically here capital U, जो constant है, into U of, मैं x नहीं लिखता फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, small u of y. So u of y is ठीक है जी, u of y is u by L into y. As soon as y approaches L, velocity would be equal to the velocity of the top plate. U of y is fluid velocity. अब ये आपने याद रखना, uy is fluid velocity. If I ask you to calculate velocity at center point, y would be equal to L by 2. If I ask you to calculate velocity at 1/3 of the total length, total height, y equals to L by 3. ठीक है, तो अब आप मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मुझे वेलोसिटी बता सकते हैं फ्लूइड लेयर्स की. तो ये क्वेश्चन क्या बता रही है, फ्लूइड वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी, किस बिहेवियर के साथ. बेस पे 0 है, टॉप पे मैक्सिमम जो वेलोसिटी आप प्लेट को दी हुई है वो है, दोनों पॉइंट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, लीनियरली. तो in plates where one plate is fixed and the other is moving, the velocity varies linearly. Velocity is maximum at the moving plate and it is minimum at the plate at rest. On the other hand, if both plates have been moving, velocity will not be linear. Velocity will be maximum at the center point. कैसे center point पे maximum होती है इसको हम आगे चल के देखेंगे. तो ये जो linear change आ रही है layers के दरमियान 0 से maximum तक की, this is because of viscosity. ठीक है, the friction between layers. क्योंकि टॉप लेयर सबसे तेज जा रही है, उससे नीचे वाली लेयर उसको स्लो डाउन करने की कोशिश कर रही है कि नहीं हम रेजिस्ट करेंगे इस फ्लो को, हम अपना सॉलिड बिहेवियर शो करने की कोशिश करेंगे, वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी. उससे नीचे वाली लेयर मजीद, उससे नीचे वाली लेयर मजीद करते करते आप बॉटम प्लेट पे आएंगे जहां पे रेस्ट वाली लेयर है, तो वो रेजिस्ट कर रही होगी अपनी रेस्ट की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए. क्लियर है? वी प्रूव दैट u of y is, for plates in which one plate is moving and the other is constant, is at rest, u by L into y. And we also proved that d beta, the angular deformation or the deformation is dA by L. ऐसा ही जी, ये दोनों चीजें क्लियर है, इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी. नो, मूविंग ऑन. व्हाट इज रेट ऑफ डिफॉर्मेशन? ओके, वी जस्ट नीड टू टेक डेरिवेटिव्स. हियर du would be equal to, डिफरेंशियल अप्लाई करूंगा इक्वेशन दोनों साइड पे, इट वुड बी इक्वल टू du by dy with respect to y. ठीक है, तो विद लेंथ वेलोसिटी ग्रेडियंट जो मेरे पास वो होगा u by L. ऐसा ही है जी, ठीक है. On the other side, what we do is we need to calculate rate of angular deformation. कि एंगल बीटा टाइम के साथ किस तरह चेंज होगा, rate is with respect to unit time. We also know that the top plate is moving. So distance is, कितना distance cover होगा कितने time में? Distance is velocity into time. The velocity of top plate is v or u, capital U, and time is t, and the distance traveled is dA. So dA, velocity of top plate, which is capital U, into differential time dt. Is it clear? We are deriving this equation from the famous second
famous equation of distance is equals to velocity into time. जी 1 मिनट जी कहाँ पे जी with respect to y with small u it's a constant बोर्ड पे देखेंगे वो टॉप पे u of y equals to u equals to constant. That capital U is constant. It's a fixed velocity. Maybe 10 meter per second, 5 meter per second, whatever you decide the value. Here we have given it a constant value of u. Clear है जी? So the equation is modified as dB or d beta equals to dA की जगह हम रिप्लेस कर देंगे u dt by L. And then you can write the rate of angular deformation as dB just by shifting dt on the other side. dB beta by dt equals to UL. And this proves that both the velocity gradient du by dy and the rate of angular deformation are same. अगर आप अपने सामने लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे देखें तो आपको ये नजर आएगा. ठीक है, we have proved this thing. That is du by dy equals to dB by dt equals to u by L. फिर यहां से आगे अब वो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी हमें इंट्रोड्यूस करवानी. ठीक है, हमारे पास 3 तरह के फ्लूइड्स हैं. न्यूटोनियन फ्लूइड्स जिनमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम अप्लाई करते हैं. उनके लिए क्या है कि रेट ऑफ shear stress या shear stress is directly proportional to velocity gradient या rate of deformation. ठीक है, क्योंकि हमने वो सिमिलर कर लिए हैं, ये डिफाइन कर दिया कि दोनों से एक ही चीज है, तो चाहे उसको हम velocity gradient के इक्वल प्रोपोर्शनल करें यहाँ, so in which shear stress is directly proportional to dB by dt or tau is directly proportional to du by dy. एक ही बात होगी. ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं. जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम रिप्लेस करेंगे विद कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट आएगा दैट वुड बी विस्कोसिटी. सो tau equals to this equation. tau is, अब वो स्लाइड नहीं आ सकती, दैट वाज व्हाइट बोर्ड, और वो एक बार मैं स्विच करूंगा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा सब कुछ. मैं आपको पहले बताया, साथ साथ आपने नोट करना है. अब ये रिकॉर्डिंग में जाके आप रिव्यू कर सकते हैं, सामने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर. ठीक है, सो tau is mu du by dy and that mu is, अब साउंड में थोड़ा डिफरेंस, दोनों विस्कोसिटी के सिंबल हैं, म्यू न्यू. ठीक है, म्यू विद m एंड न्यू विद n, दोनों विस्कोसिटी के ही सिंबल्स हैं बट डिफरेंट तरह की विस्कोसिटीज. ठीक है, सो म्यू इज विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी. ठीक है, द माइक्रो सिंबल, माइक्रो इज विस्कोसिटी. जब भी हम नॉर्मली विस्कोसिटी की टर्म यूज करते हैं, इट मींस द माइक्रो सिंबल, द म्यू सिंबल. और डायनामिक विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ये तीनों इसी के नाम है. ठीक है, सो इट इज फॉर फ्लूइड्स वेयर rate where shear stress is directly proportional to rate of deformation or velocity gradient. ठीक है, और अगर ये नॉन लीनियरली रिलेट हो जाए या इस लॉ को वायलेट करे तो उसको कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स. जो इस लॉ को फॉलो करते हैं दोज आर न्यूटोनियन फ्लूइड्स. दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है, और जो इसको फॉलो करते हैं फ्लूइड्स उनको न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं. जो इसको फॉलो नहीं करते दोज आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स. इसके अलावा तीसरी किस्म के भी हैं जिनको हम बकिंगम प्लास्टिक्स कहते हैं, जो कभी तो इसको फॉलो करते हैं और कभी नहीं फॉलो करते. एक खास लेवल तक फॉलो करते हैं, उसके बाद वायलेट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, उस सेमिनियम को हम बकिंगम प्लास्टिक्स के नाम से. ठीक है, बिकॉज जैसे अब वो बड़ी ही माइन्यूट एग्जांपल्स हैं. जैसे आपके पास टूथपेस्ट है, जब तक आपके टूथब्रश पे है दैट इज सॉलिड बिहेविंग, कोई लॉ फॉलो नहीं करेगी. जैसे ही वो आप
ब्रश करना शुरू करेंगे इट विल स्टार्ट फ्लोइंग, ठीक है। पेंट है, जब तक आपके ब्रश के ऊपर है फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे आप वॉल पे लेके जाते हैं फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इनको हम कहते हैं शेड थिनिंग एंड शेड थिकनिंग। कुछ जो है वो फोर्स अप्लाई करने से थिन हो जाते हैं, फ्लो करना शुरू कर देते हैं। कुछ जो है वो फोर्स अप्लाई करने से थिक होना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं। शेड थिनिंग में तो आपके पास टूथपेस्ट हो गई, जैम हो गया, चीज हो गई, ये पहले वो सॉलिड्स हैं जब आप अप्लाई कर रहे हैं। शेड थिकनिंग में आपके पास स्लरीज हो गई, जैसे आप मक्खन बनाना देखा है कभी, उसको बनाना शुरू करने से पहले वो थिन होता है, थिन होता है, थिन होता है, ऐसा ऐसा थिक होना शुरू हो जाता है, ठीक है, रेजिस्ट कर रहे हैं आप। फिर जो सैंड होती है, कौन सी सैंड, मैं नाम भूल गया हूँ, इसको दलदल कहते हैं आप लोग, उसका एक खास नाम भी होता है, इंग्लिश में पता नहीं क्या उसको क्विक कहते हैं, क्विक सैंड जी, ये ऑनलाइन किसी ने बताया, ठीक है। तो वो आप जैसे ही उसके अंदर अगर स्मूथली रहेंगे तो इट विल बिहेव एज अ लिक्विड या फ्लूइड, और जैसे ही आप उसके अंदर रेजिस्टेंस शो करना शुरू करेंगे, फोर्स अप्लाई करना शुरू करेंगे, इट विल स्टार्ट टू एक्ट एज सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगी या रेजिस्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो जितने भी बिहेवियर्स हैं फ्लूइड्स के वो हमने डिस्कस कर लिए। जो फॉलो करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दोज आर न्यूटेनियन फ्लूइड, जो फॉलो नहीं करेंगे दोज आर नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड्स। नॉन न्यूटेनियन में फिर दो तरह, शेयर थिनिंग, और इसके अलावा एक चौथी किस्म है जिनको हम बकिंगम प्लास्टिक्स कहते हैं, ठीक है। वो कौन सी है, ये आपकी रीडिंग असाइनमेंट नंबर 1 है, आपकी बुक में टॉपिक गिवन है बिंगम प्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपसे हो सकता है कि इसके ऊपर एक एग्जांपल पूछी जा सके, आपसे कहा जाए कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सो यूजुअली जितने भी आपको फ्लूइड्स नजर आएंगे, जैसे लिक्विड्स जो होते हैं नॉर्मली, all liquids like crude oil, water, water at 100 degree Fahrenheit, air, they behave as Newtonian fluids. Their rate of deformation is on the horizontal axis, and on the vertical axis is your shear stress. So as you increase the rate of deformation या velocity जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, shear stress भी जो है वो ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। उनकी flow property भी उसको resist करेगी। On the other hand, in non-Newtonian fluids you have Newtonian fluids, जो सेंटर में स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है आपको ग्राफ पे, I will use a pointer here. This line is Newtonian fluid, जो लीनियर बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है। Then you have shear thickening and shear thinning. On the upper side you have shear thinning, कि जैसे जैसे आप shear stress बढ़ाते जाएंगे वो फ्लो ज्यादा करते जाएंगे, फ्लो जो है वो ज्यादा स्मूथ होता है। इसमें हमने जैम की बात की, चीज की बात की, हमने टूथपेस्ट की बात की, ठीक है। तो ये चीजें। ऑन दी अदर हैंड shear thickening कौन से हैं, कि जैसे ही हम फोर्स बढ़ाएंगे, स्ट्रेस बढ़ाएंगे, वो उसको मजीद रेजिस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे क्विक सैंड हो गई, स्लरीज हो गई कुछ, ठीक है। बुक में काफी ज्यादा एग्जांपल्स गिवन है, आप टॉपिक बुक से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा बिंगम प्लास्टिक्स, जो किसी हद तक पहले फ्लो को रेजिस्ट करती हैं, ठीक है, और फिर एक खास पॉइंट से आगे जाके, यानी अगर आप देखेंगे बिंगम प्लास्टिक्स में, तो एक टॉ यील्ड चाहिए आपको, एक यील्ड स्ट्रेंथ चाहिए उनको फ्लो कराने के लिए। जैसे सॉलिड्स के अंदर आपको फ्लो कराने के लिए खास फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, खास यील्ड स्ट्रेंथ तक फोर्स लेके जानी पड़ेगी, उसके बाद वो फ्लो करेंगे, उससे पहले वो फ्लो को रेजिस्ट करेंगे। तो इसी तरह कुछ फ्लूइड्स भी हैं जो पहले इस चीज को रेजिस्ट करेंगे फ्लो को, जैसे पेंट मैं कहूँ, ठीक है। पेंट आपने डिप किया, अपने ब्रश को आपने क्लीन कर दिया, जो ब्रश के साथ है वो होल्ड करेगा अपनी पोजीशन, ठीक है। जब भी आप एक खास फोर्स अप्लाई करना शुरू करेंगे तब वो आपकी वॉल पे, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। सो दे आर नीदर फ्लूइड नॉर अ सॉलिड, तो ये फाइनाइट नॉन जीरो फोर्सेस को विथस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी लेवल की वो फोर्सेस हैं, बहुत छोटे लेवल की यील्ड स्ट्रेंथ है। बट जैसे ही वो निकल जाएंगे इससे आगे, जैसे टूथपेस्ट, मायोनीज भी इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ठीक है। पहले सॉलिड की तरह बिहेव करें, फिक्स्ड हैं, एक खास फोर्स जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे वो फ्लो नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा विस्कोसिटी को फॉर्मली एक्सप्लेन करने, यूनिट्स क्या होते हैं विस्कोसिटी, एक टर्म हमने एक्सप्लेन कर दी है म्यू। म्यू क्या चीज है, म्यू इज डेरिवेटिव ऑफ न्यू, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं न्यू को, एंड जस्ट रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी विद डेंसिटी, ठीक है। इट्स रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी विद डेंसिटी। तो एक ही चीज है, क्योंकि डेंसिटी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है हर फ्लूइड की, सिर्फ उसी की एक डिफरेंट फॉर्म आप यूज करेंगे। बहुत सी जगहों पे आप देखेंगे इक्वेशन में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, हम न्यू क्यों बना रहे हैं, आपका क्वेश्चन है न्यू क्यों चाहिए फिर हमें, अगर दोनों रेशियो ये दो कांस्टेंट्स की, विस्कोसिटी भी कांस्टेंट है फ्लूइड के लिए, डेंसिटी भी कांस्टेंट है फ्लूइड के लिए, तो हमने ये तीसरा कांस्टेंट क्यों ड्राइव कर लिया। इसलिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हजारों इक्वेशंस आपको मिलेंगी जहां काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है आप लिख सकते हैं अगेंस्ट डेंसिटी एंड म्यू, जो आपकी डायनामिक विस्कोसिटी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हर जगह ये रेशियो आपको नजर आएगी, कहीं आपको डेंसिटी डिवाइड बाय विस्कोसिटी नजर आएगी, कहीं विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी नजर आएगी। तो वो हर इक्वेशन के अंदर ये बार बार लिखने की बजाय, बार बार आप ये वैल्यूज दोनों की अलग अलग टेबल से ढूंढें या दोनों की वैल्यूज अलग अलग दी जाएं, आपको उस रेशियो की वैल्यू दी जा रही है,
ठीक है, आपको ये बताया जा रहा है कि म्यू ये है, डेंसिटी ये है, उसके बाद हम आपको ये बता देंगे नहीं, इन दोनों की रेशियो ये है आपके पास। तो वो जो दो कांस्टेंट्स आपने यूज करने से एक कांस्टेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक कांस्टेंट से आपका काम चल जाएगा, आपको बार बार दोनों कांस्टेंट्स नहीं देखने पड़ेंगे। ठीक है, यूनिट्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी के आप देखेंगे तो आपको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर डायनामिक विस्कोसिटी के, जिसको विस्कोसिटी कहते हैं, या पाउंड सेकंड पर फीट स्क्वायर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सिर्फ आपने यूनिट्स ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी को डिवाइड करना है यूनिट्स ऑफ डेंसिटी, तो आपके पास डिफरेंट यूनिट्स आ जाएंगे। इसमें फिर डिफरेंट यूनिट्स डिफाइन किए हुए हैं कि पॉइज क्या होता है, पॉइज इज बेसिकली 1.1 ऑफ अ पास्कल सेकंड। ठीक है, न्यूटन सेकंड्स जो है वो यूनिट है आपकी न्यू के। तो ये आपने चीजें डिटेल से देख लेनी है, यूनिट्स वगैरह इक्वेशन से ड्राइव आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड कर दूं तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं। आपने अब जो रीडिंग असाइनमेंट है, दो चीजें, एक बिंगम प्लास्टिक्स को आपने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, इनका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, लेकिन इनको डिटेल से आपने पढ़ना है। नंबर 2, आपने पढ़ना है बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस विस्कोसिटी। ये बुक में आपकी टॉपिक है कि कैसे विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है इन लिक्विड्स एंड गैसेस। क्या लिक्विड्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? ठीक है, दैट यू हैव टू स्टडी। ठीक है, इन गैसेस क्या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ठीक है, छोटा सा उसके ऊपर हिंट देता हूं आपको। अगेन आपको फिर जो है वो, जब भी मटेरियल्स रिलेटेड कोई आपने प्रॉपर्टी वेरिएशन पढ़नी है ना, तो आपको मटेरियल स्ट्रक्चर बड़ी क्लियरली आपके ज़हन में होना चाहिए। फॉर लिक्विड्स फ्लो विस्कोसिटी क्या है जी? रेजिस्टेंस फॉर एनी फ्लूइड टू द फ्लो। फॉर लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर लिटिल बिट स्ट्रांगली अटैच्ड एज कंपेयर टू गैसेस। जैसे टेम्परेचर आप राइज करेंगे तो क्या होगा? You are giving energy and that energy will start releasing molecules from the structure. वो bonds break करना शुरू कर देगी। जैसे ही bonds break करना शुरू की तो resistance to flow जो है वो कम हो रही है। अगर resistance to flow कम हो रही है तो viscosity should decrease। ठीक है, for most of the liquids. On the other hand, in gases, molecules are already free, they have energy to move. जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो उनको मजीद एनर्जी मिलेगी इधर उधर भागने की, which means collisions, number of average collisions will increase per unit time, which means viscosity will increase। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, इसमें फिर आपने जो एनॉमलीज हैं वो आपने देखनी है, पढ़नी है डिटेल के साथ। फिर आपने देखना है प्रेशर के साथ क्या होगा। और लिक्विड्स तो हमें पता है इंडिपेंडेंट होगी, विस्कोसिटी जो है वो प्रेशर के साथ, बहुत ज्यादा अगर प्रेशर हो तो फिर जाके कुछ फर्क पड़ेगा, अदरवाइज इट विल रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। बट सॉलिड इन केस ऑफ गैसेस क्या होगा, क्योंकि कंप्रेसिबल हैं, तो जब प्रेशर इंक्रीज करें तो फिर विस्कोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, सो वी क्लोज टुडेस टॉपिक्स हियर।